Hello guys, welcome back. In my previous video, we discussed about the energy of signal, power of signal, and fundamental period. And we also discussed about the operations of signal. We discussed about the shifting and scaling operations, and now we will discuss the time reversible operation. So in this given graph, the mathematical equation is y2 equal to x minus of t. Here is x, okay. Remember this is here is x. I have written wrong. And for time reversible, minus 3 goes to plus 3 and 1 goes to 1. It is the this graph is the mirror image about the y-axis. And fifth, fourth, fourth operation is amplitude reversible. In this, the output graph is mirror image about the x-axis. In this graph, you can see that the xt equal to minus of xt. Okay, this graph is the mirror image about the x-axis. Let's take one example. xt graph is given. xt graph is given, and we have to draw the diagram graph of y2 equal to x minus 2t plus 3. To calculate the this equation, we have to draw the graph of x minus 2t. So from to get this graph, we have to draw for x to t. For x to t, this limit will divide by 2, and this is also divided by 2. 6 by 2 and 3 by 2, and it is here is x minus 2. So third property will be applied here. Third operation is time reversible. So time reversible means 3 by 2 6 by 2 goes in this side, and 3 by 2 goes in this side. So x minus 2 graph is this one. And for to calculate the x minus 2t plus 3 by 2, we take common from here to 2. Then this is t minus 1 3, and here is minus 1 by 2. So it is the right shifting case. So we shift the graph in to the right 1 by 1.5. So final graph is this one. And one another point is remember to here is the energy of signal is independent of amplitude reversible, time reversible, and time shifting. Next we will discuss about some basic function of that we required in signal system course. The first function is delta function, and we also call it unit impulse function. So mathematical representation क्या होता है इसका? Mathematical representation is xt delta t is equal to when t equal to 0 it gives 1, and when t is not equal to 0 it gives 0, and graph will be this one. And delta function is even function, and area of delta function is 1. Some basic property of delta function is if xt yt equal to xt delta t minus t, then xt equal to xt1 dot delta t1. In this graph we can see that 2 sin, and example is 2 sin yt equal to 2 sin t dot delta t minus pi minus pi by 2. So we put the pi by 2 in this equation, and we get final answer 2 delta t minus pi by 2. And same is here. Next example is next property is very important property, because related to this property a question is asked in GATE exam, college level exam, and IAS exam also. So first property is integration integration minus infinity to plus infinity xt dot delta t minus t1. So answer will be xt1. We put that t equal to t1 in xt.
and proof of this equation is this one. And another property is integration minus infinity to plus infinity xt dot dn dtn delta t minus t1. Here is t1, and this is equal to minus 1 to the power and dn tn xt at the value of t1. So by one example is here related to this property, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी स्क्वायर प्लस 3t, तो एक्स टी का वैल्यू दिया हुआ है और डेल्टा डैश टी माइनस 2 दिया हुआ है। तो पहले अपन को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t एंड देन वी पुट द वैल्यू 2, तो आंसर विल बी -7। नेक्स्ट फंक्शन इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो नेक्स्ट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। So mathematical representation क्या है इसका? When t is greater than 0, here is t greater than 0. Okay, this is t greater than 0. It gives the value 1, and less than t 0, then it is 0. In graphic representation is, you can see that when t is greater than 0, it gives the value 1, and when t is less than 0, it gives the value 1. So what will be the value at 0? तो 0 पे वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं अपन? मैक्सिमम वैल्यू प्लस इसका एवरेज लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एट 0 1, एंड मैक्सिमम वैल्यू एट 0 इज मिनिमम वैल्यू इज 0, देन एवरेज वैल्यू इज 0.5, बिकॉज एट दिस फंक्शन एट 0 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ut प्लस ut माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ut का ग्राफ ये होगा, दिस वन, एंड u माइनस टी का ग्राफ क्या होगा? यहाँ से ये ग्राफ पूरा टाइम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो ये ग्राफ पूरा इस डायरेक्ट मिरर इमेज हो जाएगा अबाउट टू y एक्सिस। तो दिस गिव्स यू द वैल्यू 1। ओके, एंड सेकंड इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड ut। तो अपन यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा टी फंक्शन आएगा, एंड जब इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा टी फंक्शन का तो इम्पल्स यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा। ओके, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज द एग्जांपल इज गिवन, वी हैव टू ड्रॉ द स्केच। ओके, ut का ग्राफ दिया हुआ है and you have to calculate ut minus 3। तो अपन t को, this is t minus 3, okay, तो we have to shift the graph to the right side। when minus is given, we have to shift the graph to right side। तो ut का ग्राफ ऊपर दिया हुआ था and we have to shift the graph to right side। okay, and condition क्या हो जाएगी? when t is greater than 3, it gives the value 1, and when t is less than 3, here is less than 3, okay, and t is less than 3, it is gives the 0। तो from unit step function we calculate the rectangle pulses in order to get this one। okay, so for rectangle pulse the equation of here is t minus t naught minus ut t minus t naught। t naught की वैल्यू कुछ, t naught की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो टी नेट की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रिकंसिडर किए 2, तो यू टी माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा दिस वन, यहाँ से टी माइनस 2 एंड यू, फिर अपन माइनस यू टी माइनस, सो हियर इज गिवन यू टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस 4। प्लीज रिमेंबर दिस इज -4। सो टी इक्वल टू -2 पे ग्राफ ये हो जाएगा, एंड व्हेन यू द amplitude reversible properties will be applied here, and this is graph, time reversible properties is applied here, and this is the minus of this one। so this graph is rectangular pulses। and next is मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अपन को इसका ग्राफ कैलकुलेट करना है। तो 0 से t, when t is greater than 0 less than 3 it become 1, and when t is greater than 3 it is 0।
तो ग्राफ इसका ये हो जाएगा। एंड सम अदर फंक्शन इज रैंप फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन। रैंप फंक्शन को अपन यूनिट स्टेप के फंक्शन में इस तरह टी यूटी के रूप में लिखते हैं। पैराबोलिक सिग्नल को टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ut. And next we will discuss about the